हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। सो बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारी आरज़ुएँ होती हैं, बहुत सारे एम्बिशंस आप गोल्स रखते हैं और उनको पूरा करने के लिए यू हैव टू हैव रिसोर्सेस। In this episode, I get to talk a lot about my personal financial goals, and Mr. Ravikant Rathore, he's going to help me plan my future, and I'm really excited for this episode today, sir. थैंक यू सो मच अर्नव, आई होप आई विल बी ऑफ हेल्प टू यू। तो सर लास्ट कुछ एपिसोड्स में हमने काफ़ी सीरियस चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है. In this episode, I want some personal advice from you. I'm a fresher and you're definitely a veteran at this point. I'm sure you have a lot to share. तो I would like to start with the fact that जो मेरी जनरेशन है, not just my generation but anyone who's young, हम अपने काफ़ी लाइफ को डिज़ायर्स और एम्बिशंस के ऊपर बेस करते हैं. बिकॉज वी हैव ह्यूज ड्रीम्स, वी वांट टू अचीव अ लॉट, वी राइट एट द बिगिनिंग ऑफ आवर जर्नी. तो मतलब देयर इज़ नो बैरियर फॉर अस. हम सब कुछ करना चाहते हैं, राइट. बट काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बीच में मनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. The amount of money that you have, it can really limit what you can do. So in this episode, I just want to understand what are the right kind of financial behaviors and the financial practices I can follow up till the time I retire, also while enjoying my life and living it to my fullest extent. श्योर अर्नव, एंड वेरी राइटली पॉइंटेड. आपकी जो ये समस्या ये आपकी नहीं है, सिर्फ ये बहुत सारे यंग जनरेशन की है. एंड I don't know if I can say that I'm the right person, but whatever I have learned, I'll definitely would love to share with you. जैसे कि हमने ये देखा अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पिछले 20 सालों में, मैंने ब्रोकरेज फर्म में काम किया है. आई हैव सीन पीपल ट्रेडिंग, आई हैव सीन पीपल इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट. आई हैव सीन एज अ पार्ट ऑफ माई प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ client profiling, wealth management. So as a wealth manager, I have seen how rich people have behaved with their money and how they have become rich, or what are their behaviors in terms of specifically that I have observed, which will be helpful to us. And as also now as a investment manager, I would say that what I have learned from the markets also. सो बेसिस दिस अगर मैं आपको पर्सनल फिनेंस की तरफ से अगर मैं कहूँ तो कुछ आध बिहेवियर्स ज़रूर है, बहुत ज़रूरी होती हैं, जो अगर हम लाइफ में हमारे अमल करें हम, तो इट विल बी रियली ग्रेट टू हैव अ गुड, आई थिंक सिक्योर अ गुड फाइनेंशियल फ्यूचर. एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू यंगस्टर्स, एज यू हाईलाइटेड, यंगस्टर्स लोगों में आई थिंक गालिब ने बहुत ही अच्छा शेर कहा है कि हज़ार ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले. सो बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारी आरज़ुएँ होती हैं, बहुत सारे एम्बिशंस आप गोल्स रखते हैं और उनको पूरा करने के लिए यू हैव टू हैव रिसोर्सेस. It could be financial resources, it could be intellectual resources, it could be any kind of thing that can help you achieve that goal. So as far as what I can help you at least is that if what are the financially, I mean, better habits that you can have, that is what I can at least tell you what I have learned in my life. So one of the most important thing coming at this stage of life I have learned is that the first thing for a financially secured life should come is the health. So you would say that where's the connect between a health and the financial I would say health. Then I will say that the health precedes, I mean, your medical health precedes much more than your financial health. Because there's a good quote from Warren Buffett when he says that to a 20-year-old person, if at all he wants to exchange his life, okay, with a 90-year-old person who's an extremely wealthy man, so you can take all his wealth and his age and give him his age. Give him like his age of 20 years. Right. Would he like to exchange for that? And then the clear answer is no, because of course, because 90 years age, it means कितनी रह जाएगी लाइफ. तो उसी तरह से हो जाता है. आई मीन आस्क अ पर्सन हु इज़ ऑन अ हॉस्पिटल बेड, द मोस्ट important thing or the thing that he would like to have most is the health.
So health is very important to enjoy all the things that you will create in your life. आप फाइनेंशियली सिक्योर होंगे भी तो भी फाइनेंशियली वेल ऑफ भी हो जाएंगे, लेकिन अगर हेल्थ आपको परमिट ना करे तो आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे. सो इट स्टार्ट्स विथ हेल्थ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़. And this is also I would also include this with mental health. So it's very important that we take care of our physical as well as mental fitness, and ensure that we do not take huge stress on what we want to achieve. Everything will fall in place. अगर मैं इसको स्पिरिचुअली ले जाऊँ थोड़ा बहुत, अगर एक स्पिरिचुअल Why not? कंटेक्स्ट भी देना चाहूँ, तो everything happens with a reason, and kind of like it will happen in its own pace. You just keep trying, put your best. As I would say that निदा फाजली जी ने इसे बड़ी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा. वो दो लाइनें हैं जो कहती हैं कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख और रास्ता भी चुन, और फिर उसके बाद कुछ मुकद्दर तलाश कर. So we have to see life as events which happen, one because of your choices, and there is also some part of stroke of luck also, and you need to be just prepared for things, that's it. And let luck do on its own. So that's very important. Now coming back to financials, now हम spiritual से अब financially आ जाते हैं. तो कुछ रूल्स कहा जाए या कुछ बिहेवियर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक स्पेंडिंग को रैशनलाइज करना. सो as a person who's just started to earn, there is always this urge to spend. हम बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम अपने इमोशंस में कैरिड अवे रहते हैं, तो एट द विम ऑफ आर इमोशंस वी spend a lot, because we do not feel that responsibility of fulfilling some kind of financial burden. We are just free, we do not have any kind of financial burden. एंड इफ आई मे ऐड, इसके लिए रीज़न है क्योंकि आप अभी तो फ्रीडम आई है, मतलब जी, अभी तो इससे पहले तक जो थी नहीं. इनिशियली जो आप अर्न करते हैं, it gives you that freedom and you would like to enjoy it, and rightly so. It is the age when you would love to enjoy them, but you'll have to at some point of time rationalize also your expenditures, because there has to be some balance in it. So always think whenever you want to spend it, some of the small things can really help you a lot. जैसे हम जब कोई शॉपिंग ऐप में जाते हैं, हम ऐसे ही स्क्रॉल करते हैं बिकॉज देयर इज सम एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है, एंड आई personally believe that this has really helped me in at least saving me some kind of at least expenditures. What I do is generally, if I feel like buying something, so I put them in the cart, but I don't buy them or make the payment immediately. I just let them stay in the cart for a day, and then again go back and think about it again, do I feel like buying it? तो आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को डिले कर रहे हो. जी, and it helps a lot. The delaying of gratification is one of the most important personal behavior trait which helps in securing your financial future, because आप जब अपने आप को रोकते हैं कि ये ज़रूरी है कि नहीं, आप क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये बहुत ज़रूरी है, क्या मैं ये एक्सपेंडिचर टाल सकता हूँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप सोचते हैं कि तब आपको ये फील होने लगता है कि देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर्स विच यू कैन स्टिल डू अवे विद, यू डोंट नीड टू. एंड नीड एंड वांट में फ़र्क करना आप सीखने लगते हैं. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो बट देन प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं कह रहा हूँ कि आप एक्सपेंडिचर्स को बिल्कुल कंट्रोल कर लीजिए. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि दो एक्सट्रीम एंड्स होती हैं. एक है जहाँ आप कहते हैं कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले. तो या आप चले जाते हैं उस मोड में जहाँ आप बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं, एंड यू कीप स्पेंडिंग टू फील दैम, एक्सपीरियंस दैम. राइट. बट देर आर पीपल हु विल से दैट कि आपको बचाना चाहिए. तो पीपल गो टू द एक्सट्रीम एंड वेयर दे से कि आरजुएं 1000 रखते हैं फिर भी हम दिल को मार रखते हैं. सो ये जो मीर जी की जो गज़ल है, इसमें भी ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि यू डू नॉट नीड टू बी स्टिंजी, यू डू नॉट नीड टू बी अ पर्सन कि मैं बिल्कुल एकदम कंजूसाई करूँगा और मैं कोई भी खर्च नहीं करूँगा. ऐसा भी नहीं होता है. यू हैव टू हैव अ बैलेंस इन योर लाइफ, इन योर एक्सपेंडिचर, एंड दैट्स वेयर आई यूज़ द वर्ड रैशनलाइज. तो आप अपने एक्सपेंडिचर के बारे में सोचिए, उसको देखिए, एनालाइज कीजिए कि ये कितना ज़रूरी है, एंड कैन यू डिले इट, कैन यू अवॉइड इट.
और ऐसी चीज़ें जो आपको सेव करने में हेल्प करती हों. So those are things, small things that you can look at. Second most important thing is that in this world where it is very easy to get a no cost EMI at a click of the button, a loan at the click of the button, we get into this tendency to buy things which we believe that it's costly and we may not be able to afford it, but because of the easy availability of no cost EMI या फिर in low interest or easy lending kind of thing, आज के समय में it's just easily available. So there is a tendency where we overspend there. Right. So that the point that I want to make is that कि you have to always try to keep your debt at lower levels. तो जितना हो सके डेट जो है, जो लोन्स है, वो जितना कम आप कर सकते हैं उतना बेटर होगा लाइफ में. Now coming to the loan part only, there are certain times then you will be forced to take a loan or you will find that you should take loan. I would rather say कि अगर आप लोन लेना भी चाहते हैं लाइफ में तो एक प्रिंसिपल इस तरह का रखिए कि आपको लोन लेना है तो एसेट क्रिएशन के लिए. सो देर आर सम टाइम्स व्हेन जैसे हम फाइनेंशियली जब हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं वर्ड लेवरेज. लेवरेज इज़ बेसिकली टू एनहांस द कैपेसिटी, बेसिकली टू हैव ए मल्टीप्लायर इम्पैक्ट. सो अगर आपको लेवरेज यूज़ करना है या लोन यूज़ करना है तो आप एसेट क्रिएट कीजिए, एसेट्स विच कैन पे ऑफ दैट लोन. सो जैसे अगर होम परचेज के लिए हमें लोन लेना ही है. Right. So now home can be an asset if it is a second house, but home if it is for your personal self consumption, you want to stay in that, then you personally in personal finance people consider that as a prudent behavior to not consider your home that you stay in as an asset. Right. So it's for your staying purpose, it's for your living purpose. तो ये जो है, ये आप जब एसेट क्रिएट करते हैं, जब आप अपने लिए लोग घर खरीद रहे हैं, टू थिंग्स. वन, जब आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि आपका जो EMI है, इंस्टॉलमेंट है, वो मैक्सिमम 40% और वर्स्ट केस में 50% ऑफ योर इनकम हो. So that on a monthly basis you still have got your 60 to 50%, 50 to 60% amount For your other expenses and savings. Right. Because you just cannot have a life where your 70%, 80% amount goes into EMI payment and then you're left with only meager amount to live for. I mean that's where it will be a very difficult time period for you or for any person rather. So that's important. One, that you keep your installments closer to the 40 to 50% mark. Second, very important thing is that you should always aim to pay off your debt first, anyhow. Because if at all in this age of uncertainty, the loan is the last headache that you would like to have on your hand. It just frees you up when you're not, you do not have any kind of loan on yourself. So it helps. So trying to pay off loans which kind of do not, आप अगर उस पैसे से और उससे बेटर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं और बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, नो डाउट. बट इफ़ यू डू नॉट हैव एनी यूज़ इन लाइक एनी बेटर अपॉर्चुनिटी, then pay off that loan. Paying off that loan early is the most important because अगर आप इंस्टॉलमेंट्स को टोटल भी करें तो आप जो बैंक को पे करते हैं that is a huge one amount. Right. So it almost goes into double of the amount that you have taken as a loan. So paying off your loan as early as possible is a much better option. Next thing that I would like to talk about is the investment discipline. So generally tendency ये रहती है as a financial behavior हमारी कि हम पहले स्पेंड करते हैं और जो बचा अमाउंट होता है उसको इन्वेस्ट करते हैं. बट वी शुड रिवर्स दैट. वी शुड फर्स्ट इन्वेस्ट एंड देन स्पेंड. सो फर्स्ट थिंग होता है कि जैसे अगर मेरा गोल है, मुझे कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो वो पहले कर लीजिए. जो अमाउंट बचता है उससे फिर आप एक्सपेंडिचर करने की कोशिश करें तो यू विल बी एबल टू रैशनलाइज योर एक्सपेंडिचर इन अ मच बेटर वे बिकॉज यू नो दिस इज द ओनली अमाउंट that is left with me for spending. That's a very important thing. So you should say that no, the investment comes first and the expenditure comes next. So first thing, save and then spend. Right. Not spend and then save. And another important factor that I believe that should always be the focus is that हम एक्सपेंडिचर कम करने की बात करते हैं, हम बात करते हैं इंक्रीजिंग द सेविंग्स ऑल्सो.
बट हम एक चीज़ भूल जाते हैं, वो है कि सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, एट दिस एज वी शुड इंक्रीज़ आवर अर्निंग कैपेसिटी. सो इसका मतलब ये होता है कि वी शुड फर्स्ट इन्वेस्ट इन आवरसेल्व्स. हमें अपने आप पर पहले इन्वेस्टमेंट करना है. सो द ह्यूमन कैपिटल फैक्टर हम पहले करें, उसके बाद इकोनॉमिक कैपिटल रेज करें. सो पहला इनिशियल, जो फर्स्ट इनिशियल ईयर्स जो होते हैं कैरियर के, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन एनहांसिंग योर लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अपस्किलिंग वन सेल्फ, सो दैट यू कैन अर्न मोर. जब आप ज़्यादा कमाएंगे तो आप ज़्यादा सेव भी कर पाएंगे. बिल्कुल. And this is the age where you can actually upskill in a much faster way. Right. So this is where I would say that these are certain things that I would tell any youngster to keep in mind for a good financially secured life. बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरे करियर के लाइफ स्पैन में मैं हर 2-3 साल काम किया करूँ और फिर 6-7 महीने के लिए मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ट्रैवल इज़ अ ह्यूज पार्ट of the human experience too, right? Very valid question, Arnav. This kind of behavior is definitely trending. I think these days people do believe that there is no need to do a kind of 8-hour fixed job if you really want to. But all the more becomes important to have a financial stability in life, to live a life like that. So in today's gig economy, where we call it where people work for some on a part-time basis or on a need basis. Right. Rather, I would say that on a need basis, and then try to enjoy their life, enhance their experiences. It's there's no problem unless one also focuses on creating some kind of corpus which can help in rainy days. So मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसे लाइफ जीना चाहते हैं जहाँ आप अपने हिसाब से काम करें और अपने समय पर आपको लगता है कि जैसे होता है कि हम कुछ समय के लिए काम करें और कुछ समय के लिए ब्रेक लें, तो फर्स्ट थिंग आपको इंश्योर करना होगा कि आप अपने आप को अपस्किलिंग इस लेवल पे करें कि देयर इज़ ऑलवेज वर्क फॉर यू वेन एवर यू वुड लाइक टू. So this is an important thing, because otherwise if you're a person who will keep moving in and out of job market, then you need it actually kind of doesn't help you so you need to be really a professional whose work is in demand. Right. So you have to look for work areas where your job or your work that you will do is not dependent on you being there in office for 8 hours kind of thing, and plus it doesn't require any kind of continued services. Right. So you look for those skills to be acquired, to acquire those skills. Secondly, very important is that you should always prepare for some kind of eventuality, in the sense that what if you came back after your 6 months break and you don't get anything to do, work immediately. Then there should be something which can sustain you for that lean period. So you should build an emergency corpus kind of thing, which generally I would say that there are so many rules in terms of there's people who can say that it's a 10 times, 15 times, 16 times kind of thing. But I can say one thing, that I believe 18 months of expenses should be something you should target to create as an emergency corpus. So at times when you are still searching for work and your regular income is some time for to come, that till that time this at least sustains you. इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि आप 18 महीने अगर आपका कोई रेगुलर इनकम नहीं मिलता है तब भी आप उसे सर्वाइव कर सकें. तो ये एक ज़रूरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. रेस्ट आई बिलीव as we previously discussed, some of the financial behaviors you should always keep in mind is that since you are not a person who is going to be having a regular income kind of thing, so the debt should be something you should be last in your mind, because लोन रुकता नहीं है. आप ब्रेक ले लेंगे लेकिन लोन ब्रेक नहीं लेता, EMI ब्रेक नहीं लेता है. सो आपको ये भी देखना होगा, इंश्योर करना होगा कि आपकी जो लोन है या EMIs हैं वो इतनी मिनिमल हो कि इट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग योर डिज़ायर to enhance your experiences by going and by taking breaks, or for taking breaks rather, I would say. Right. So ये कुछ points हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए. रिटायरमेंट के बारे में डिस्कस तो किया है हमने, बट how much of choice is involved in retirement? मतलब can I decide that I want to retire at this time in life?
You can always, if you remember, Arnav, in our very first episode, we had discussed about financial freedom. So this is what financial freedom is, where you decide when you want to retire. Right. From an NPS product perspective, I had already explained that आप premature withdrawal कर सकते हैं, provided you buy an annuity for 80% of your amount. So that is something which is a requirement as an NPS product. And in fact, it will help you also. The reason being, अगर जब आप 80% अमाउंट यूज़ करते हैं एक एन्युटी बाय करने के लिए, तो वो आपको एक रेगुलर इनकम इंश्योर कर देता है. तो जब आपको एक रेगुलर इनकम इंश्योर्ड रहता है, एक एश्योर्ड हो जाता है आपका रेगुलर इनकम, सो यू देन एक्चुअली फील काइंड ऑफ रिलीव्ड दैट कि एटलीस्ट एक मिनिमल अमाउंट आपको मिल रहा है जिसमें आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं. एंड देन यू जस्ट नीड टू इंश्योर दैट कि वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू डूइंग इट गुड देन. तो सर अब एक बहुत क्लीशेड क्वेश्चन है, बट इफ़ यू गो टू यूट्यूब, इफ़ यू गो टू इंस्टाग्राम, एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, you will find so many people giving out financial advice, and a lot of them have these thumb rules, for expenditure, for saving, and basically a bunch of these thumb rules. Do you have any thumb rule that you would recommend to me and the listeners? So one very important thing, Arnav, is that thumb rules are always generic in nature. So thumb rules can help you in terms of a gross idea, to have a gross idea. But as I always say, reaching out to a financial advisor who can actually use his knowledge and your situations, assessment of your situation properly to give you a proper financial advice. That's one and the foremost thing. And as far as thumb rules go, thumb rules are a result of financial behaviors. So the most important thing to focus on is financial behaviors. So आपको जो focus करना है वो है कि जो प्रूडेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे हमें अपने खर्चों को ध्यान में रखना चाहिए, हम इन्वेस्ट करना चाहिए, पहले इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर एक्सपेंडिचर करना चाहिए. ये जो बिहेवियर्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन थंब रूल्स थिंग. सो आई वुड से दैट के टेक ईच ऑफ देम. जैसे जो भी यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में जो भी एडवाइजरी जो आपको मिलती हैं, उन्हें एकदम एक्सेप्ट एज अ फैक्ट एक्सेप्ट मत कीजिए, उनको क्वेश्चन कीजिए. इफ इट फिट्स यू, अगर आपको लगता है कि ये आपको सूट करता है, यू कैन फॉलो. बट एज ऑलवेज इट इज़ बेटर टू हैव एन एडवाइस फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्लानर. So before we go ahead and wrap up this episode and this season, I have one last question for you. What is your retirement plan? हाँ, एज आई अर्लियर सेड, मेरा रिटायरमेंट प्लान बहुत ही सिंपल है. I will keep continuing to save for my retirement as per whatever I have considered as my corpus that I should have to sustain a good reasonable life. And the most important thing, वो मेरे जो 400 बुक पड़े हुए हैं घर में भाई, उनको कंप्लीटली पढ़ना है मुझे. Right. That's my retirement plan. So sir, I like reading a lot. Do you like reading? I love it. I have got lots of books at home, and I'll tell you what, I'm a certified Sondoku. I have kind of like 300-400 books at my home now, all in my reading list, none read full. I think that's the case with everybody. That's my retirement plan. Arey. But are there any books you would recommend that people should read, I should read? Of course, there's so many books. I can tell you that books are a very big gateway to understand and learn from a lot of great thinkers. I personally believe that books are one of the best resources that even a lot of academics may not be able to help you to learn that much. Books can help you to learn. And I personally believe books are something which should be, a reading habit should be something which we should not never let it die. We should always keep reading, and I'm a proponent for that definitely. And as far as books are concerned, as I said, there are so many favorites of mine, but if I have to mention few, so I would recommend that, when I started mentioning about some of the good things that you should follow, some of the steps that one should look at, behaviors that one should look at, and I highlighted mental health and physical health first. And for that, I would say that a book that has had a good impact on me, the big impact on me, was Gita as viewed by Swami Vivekananda. It's a very nice book in terms of explaining how Gita helps us to answer questions of our lives that we
deal in our life, what are the things that we can consider and we should think while we are living our life. It's a beautiful book. I would love to recommend that. And as our discussions have been revolving around financial behaviors, then I would, I cannot miss recommending you reading The Psychology of Money from Morgan Housel. I mean, that book is again beautifully written. It doesn't talk about any kind of, uh, you know, maths or investment recommendations, but it just tells you what is the thought process that goes behind making money, and what are the prudent thoughts that you should have, prudent behaviors that you should have. So it's a beautiful book written by Morgan. Third book that I would like to recommend is All I Want to Know Is Where I'm Going to Die, So I'll Never Go There. It's a beautiful book. बहुत ही अच्छी book है. It talks about a person who has got lots of question. बहुत सारे सवाल जैसे हमारे जीवन में आते हैं कि हम किस तरह से मतलब अपने जीवन को जिएं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमको सॉर्ट आउट करनी होती है, कई सारी समस्याएं आ जाती हैं. सो वॉरेन बुफे एंड चार्ली मंगर आर वन अमंग्स द पीपल हु हैव गैदर्ड लॉट्स ऑफ विजडम ओवर देयर लाइफ. तो ये बुक जो है वो talks about all the wisdom that they have garnered about how to live a life, kind of thing. So these are three books that I would recommend you should be there in your reading list then.